Good morning, everyone. Thank you all for joining. So guys, I came across this news today about the consumption drivers of Phoenix Mall. So probably I usually go to this mall, uh, probably every month, and I always go and see what is happening. Last time when I went to this mall, I saw that because of the GST rate cut, new products hasn't been allotted in the stores yet. All the products were of the previous previous gen, or maybe the before pre-GST one. It was a new because they have just put the tag, they have changed the tag and they have put that label on it and increase or decrease the price depending on the GST. But now what I saw over here is that this Phoenix Mall, everyone must be knowing if you're from Mumbai, Pune, Bangalore, Phoenix Mall, Palladium is a premium mall in Mumbai, Phoenix Mall Citadel in Indore, Palladium again in Ahmedabad, Millennium Mall of the Million. There are two malls in Pune. So here, what they have mentioned is about Phoenix Mall September. The electronics and the multiplex segment outperform year on year 23%, whereas fashion has a 17%, followed by jewelry, which was 12%. So I am more interested in knowing the fashion. The fashion is growing in India. As I said, consumption driving. It has led to increase. Sorry, the GST rate cut has led to increase in consumption as your disposable income has increased and people are moving towards more premium products. Misho again, consumption is yesterday the stock was up 20%. I personally don't like this company because of the this is a very I will say a volume game. It is not something that a profitability game. So I'm more interested in getting a profitable company rather than because there are the products available over here are very mass segment and there is very cost at a very cheaper price. Then when I talk about premiumization, suddenly, when I was reading this article in Financial Express, again, Starbucks is a part of your Tata consumers. So I will say Tata consumer is always in focus by some or the other reason. Not sure why. Yesterday also, I mean, Aryan gave a news about Tata consumers that Reliance is entering the market. Now in this, they are saying that the premium coffee is growing and it has become stagnant. Now Starbucks is trying to shift towards to a mass segment. Now this mass segment, and same as Domino's is doing, Skechers are doing, and Decathlon is doing. Now they want to enter the segments which is I will say a low price product so that even a normal person can go and buy a coffee at Starbucks. Normal as it if you don't want to spend that much coffee. See, now that day I went to Starbucks, I saw something about normal adrak ki chai. I think adrak coffee, something like that, a filter coffee, something. That was also costing 100, 200 rupees. But now it is like, if I go to Starbucks rather than having a 400 rupees coffee, I will prefer a 100 rupees coffee. This is what they're trying to do. Now we have to see, what, just go, if you go to Starbucks, just see how many people are buying that, or do you see people, coming in that store on a regular basis? Because the Starbucks store in my area, in Mumbai, I would say, it's always empty. No people come there. But if the pricing is lower, probably people might, probably, I'm not saying, because it obviously depends on the taste. 100 rupees coffee is still more expensive than a 10 rupee coffee that you get in a normal restaurant. Okay. So again, one news about consumption, one news about premiumization. There was one news about hotel line as well. I think who sent me this news? Okay, auto again in focus as Tata Motors, Sierra has crossed 70,000 bookings. So Anurag, can you start? Anurag, no, sorry. Okay, Avinash, Creta, Avinash, Avinash, you want to speak? Guys, please raise your hand, so Sir, I have something to present. Aniket. so that you guys are available. Please raise your hand who has written the news. Now, what happens? Okay, I have your news, so I will tell them in sync so that only auto will talking about then reality, the only reality will talk about. Just raise, keep your hand raised. Okay. Okay, Bobby, you start with Maruti. Yes. Hari, you go Just a next. second. Okay.
Just a second, just a second. Yeah. So I'll be talking about Maruti Victorious. So basically, Maruti Victorious accelerated the Maruti Suzuki mid SUV push. So basically, it lifted its market share from 25% to 29%, from October 25 to November 25. Okay, despite Mahindra's lead of 40%. So basically, Mahindra mid SUV segment, it slipped month on month, from 44% on October to 40%. So this was due to the presence of Maruti Suzuki's Victorious, which increased the market share from 25% to 29%, and the pricing of Victorious is 10.5 lakhs ex showroom. Then Victorious has averaged around 10,000 units per month, signaling strong acceptance. The reason why Victorious is working more is because of its strong network of Maruti's Arena network. And also, this Victorious is focusing on petrol, CNG, and strong hybrid powertrain option. So this is directly appealing to buyers who prioritize fuel efficiency and lower running cost. So this is the what you say. Uh, this is the main difference between Maruti and the Mahindra's SUV mid segment. And what I can see, the this combination of wider network as well as fuel efficiency should increase Maruti's market share in mid SUV segment. So this is the company wise I'm saying in mid segment. So I would say, yeah, Maruti is something to look at. Victorious have the delivery started? Yes, yes. Already it has sold around 10,000 units since Oh, October. October, yeah. okay. सितंबर में ऐसा कुछ हुआ नहीं. Mhm. अक्टूबर में ही हुआ. Numbers I have of October and November. Okay, 10,000 is per signaling a very strong acceptance. Great. Yeah, Grand Vitara. Yeah, I send you the image also. August and November. Model wise and company wise अलग से. So Victorious is sell to Arena network. Why is it so? So because Arena network में कस्टमर रीच ज्यादा है. But उधर सस्ते वाले आते हैं ना अच्छा ऐसा है क्या? कस्टमर. ये नहीं पता था. That is, yeah, that is why it is Arena. Na? Arena is something where Swift is sold or maybe Wagoner is sold, and Nexa अच्छा. was said to be a premium portfolio where premium hatchback like Baleno, Vitara, not Vitara, Baleno, and I think Grand Vitara was sold. Probably they might have done some changes. That they want also people who are coming to buy Wagoner should have an aspiration to buy Victorous. हाँ मेरे को ऐसा लग Yeah, रहा है यार वो जो ऑलरेडी फर्स्ट बायर नहीं को ये नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी correct. स्विफ्ट ये सब खरीद रहे हैं उनको ये कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई उसका प्राइसिंग भी 10.5 है. महिंद्रा का मोस्टली 12 में जा रहा है, स्कॉर्पियो एंड दोस थिंग्स. Okay, हाँ. okay. अच्छा 10.5 है I think. Okay, हाँ 10.5 है टू बी प्रिसाइज. तो उसका प्राइसिंग थोड़ा कम है. okay. Okay, Hari has something. Hari, same thing on Hyundai. Competitive answer. Hari? Yes, sir. Yes. Yeah. So, sir, my news is regarding Hyundai Creta. So, Hyundai Creta leads in mid-size SUV sector. So, the model has retained its position in this year as well, in financial year 25. So, between January and November, the Creta has averaged 70,000 units a month sales. And during the festive season, it marked around 80,000 units on October. But the industry leaders are telling suggesting that the toughest phase of Creta is yet to be reached. So this is because the Creta is facing strong competition from different contemporaries. So the most significant is the Maruti Victoris. So since entering the market in September, they have sold almost 10,000 units on an average. And Toyota Hyryder is among the another potential competitors. So the Toyota Hyryder is leveraging its superiority in hybrid sector, so which is averaging in 8,000 units per month, sir.
So what has triggered this competition is basically the products such as Victoris and Sierra. They are offering more value perceptions by effective features, which Creta is lacking. So that is why Creta is facing in the next. I mean, they have to brace the situation for this next financial year. So that is my analysis on Creta sector. So Okay. actually, I have also covered the same news Yeah. and shared you on WhatsApp. Yeah, go ahead now. Go ahead with the news. Anything to add on? Uh, just a moment, sir. I'm just opening the news. Yeah. The financial year 2026 is approaching, competition is intensifying. Toyota Hyryder is delivering a steady transaction of 8,000 units sold per month. And while the new launch like Maruti Victorious is clocked around 10,000 units in first month, existing players such as 𝗖𝗹𝗹 is also delivering 5,800 monthly units. And upcoming models like Tata Sierra and Renault is also launching their Duster with new features in Jan 2026. So these are further energizing this segment, mid SUV segment. Okay. Okay, fine. I think there's an update, Siddharth, nothing else on this. But you cannot keep Hello, remembering sir. that Hyryder is selling 8,000. 1 second, Ashutosh. Hyryder is selling 8,000. Victoris is clocking 10,000. So that's a good sign that Victoris uh, is beating. Creta is selling at what is the Creta is selling at 17,000. Still, it is So on the 70,000 peak. per month. Probably, Yeah. yeah. So it is the highest selling SUVs in India in that category. And Yeah, in though mid. the position is hit up, though there is competition is intensifying in that region, but you see people buying, aspiration to buying that. Just see how Vitara's Grand Vitara and this Hyryder turns out, because I think Creta doesn't have a hybrid variant. It's not there in hybrid. Yeah, Ashutosh, you Hello, also sir. have the same news. Yeah. Yes, sir. Avinash. Avinash, sorry, yeah. Hello. Sir, you. One Hello, second. sir. 1 second. 1 second. Yeah, Avinash, sorry. Go ahead. Yes, sir. Good morning, sir. I have also covered the same news on Hyundai Creta. Despite competition from rivalries such as Victorious, Sierra, and mid-size SUVs, Creta remains top in the segment. And I have analyzed that when new rivalry is launched, means the new mid-size SUV cars have been launched, Creta's sales are not much disturbed, and it tells us about the structural leadership of Creta in SUV segment. Secondly, Hyundai's overall profit and margins have been fallen in FY 2025, but Creta's volume is holding the Hyundai's competitive pricing and demand. So I have analyzed these 2 points from the news. Great, great, great. I think Creta is on the top. Right. So Yes, guys, sir. now the problem is everyone has written the same news, so it is always advisable to write 2, 3 news when you are, when you're an analyst, probably from different sectors. When you write about auto, Okay, sir. if there's anything about auto, you can also write something about, auto. You know how I try to link things. I started with the fashion and ended up with the Starbucks. So you can do that if you want, or else, everyone Sir, will say the same news. Nothing else. sir, Yeah. I have a query. Yeah. Avinash. Means you have told us to analyze from that news. So I have covered today 2 points from that news. I have not means written the same news, but I have analyzed it from Correct. 2 points. Correct. So Correct. it Yeah, is a Avinash, I correct like. way. Yes, yes, I like Yes. your pitch today. I just like you have Okay, sir. underlined. Thank you. Thank you. You have said perfectly right. I don't know, volumes are Oh, stable and Creta is not competition yes. intensifying, but still Creta holds his high position. Perfectly fine. I now get in my mind that Creta is still holding his position. Yes, yes, yes. And it has a structural leadership during competitive launches of other Yeah. rivalries. Yeah. But Yes. one more thing, Avinash, someone said now, I think before that Creta lacks some features that Victoros has. That is also a point Yes, to sir. look Yes, sir. at. That though they are Yes, having sir. a leadership, but the news was Uh, that it can lead to softening of the leadership because competition is intensifying and Creta is not up to the mark. That also you can be you so, can say that, sir, this can happen as per your analysis if you do, okay, sir. if you can do it. Uh, Because since I am yes, a we car have to. fanatic, yeah, sorry. Uh,
We have to Uh, analyze strength and weakness both. Yes, yes. So you have to also, no, there is up to you because this is my analysis. Because someone told me that, Okay. Creta doesn't have the features of this, your Vitoras. And, as Okay. I've said, Creta doesn't have an hybrid variant as well. So this is a Yeah. research that I'm talking about. Since I'm doing research, I love cars. That is why I know all Hmm. those things, nothing else. But in future, I will expect, to know more about more things than this was perfect. Today was perfectly fine. Nothing to, Okay, sir. no complaints about it. Sir, I have a Thank you, sir. news Thank you. regarding energy I have sector. written the same news. Sorry. Sir, I have a Optical news regarding energy sector. Energy sector. Why energy sector, Yeah, sir. Suresh? Why about energy sector? Sir, there is one bill came in Lok Sabha that till now only government company were allowed to make a nuclear plant or nuclear energy. Now government has came with a bill where private player also can do this thing. Now tell me what is the difference between L&T's power and 𝗵𝗹's power and what which companies you have written? What is the difference? Most of these companies like L&T and BHEL, No, these I are just ask you what is the product difference? What is the difference very, between L&T power and your 𝗵𝗹? What is the difference? I've told you not to take this companies. One second, guys. my topic was like there is one bill. It means private player can also participate in this nuclear project. So Hello, sir. Can we link this news to the EV sector because because of the private player participation, the production of electricity will be increased, which can be direct increase the electricity, sir. You can link that. But as I've said, Bharat, it is just towing 5%, 4% of today only. It was in the news that EV only contributes 4% of the entire passenger vehicles. Entire. So, okay, fine. But see, what is the point? We are into equity analysts. We want to have ownership into a company. You don't even know what is the difference between Reliance Power, a Tata Power, and a Torrent Power and L&T. Do you know what is the difference? Bill pass for fine. It's an update. How will you define this in interviews? See, assuming this is an interview call, the reason we are doing this, that you are speaking in an interview, you have to be confident that whatever you are saying, let's say if I ask you what you read in the newspaper, let's say if you read about automobile, you should talk about, as how Avinash mentioned, and they have mentioned the leadership, etc., etc. This all you need to be focused enough to tell in the interviews. Why? Because we are following some sectors. See, when you do a research, it is never a random research. It is always a sector focused research. Because as a fresher, you just cannot take any stock and start talking about it. And if you're stopping, I have told you to write automobile update. There is an automobile workshop videos in the link that you need to prepare it. So other people are doing that. So you know about automobile, you know about FMCG, because FMCG we are tracking in the last class. Today we are talking about the tourism sector and anything fashion. See, if we are tracking 2, 3 sectors, then we understand sectors that we understand we should track. Now, I will say focusedly, if you go in the interviews, okay, sir, I am reading the newspaper, this is what I'm getting. But why I'm tracking other sectors? Because see, we were talking about tourism. In tourism, fashion also comes now, because when you go out, you spend money on electronics and your fashion, correct? So that is the reason, Yes, sir. this is all to be linked. That is why I take this sector. I always track. So how today I linked, that FMCG with, sorry, your uh, premium products, the malls into your the Starbucks part. The reason we track all these sectors to link each other. Sectors are linked, means economy is linked. No? If you are buying cars, probably it means that you are buying expensive products. Means you have the capacity. Correct. So that is why sector focus. You should keep a focus on a sector where you know about it. If given a choice, if I track, track this sector, you should able to track this sector. Power, then your metals is very difficult to track. You don't even know who is the consumers of power apart from electric. Where is the major chunk of power consumption? Pata, who is consuming the power and how much power is consumed in per day in India?
But now if I ask you, do you know how much Cretas are sold per month? Do you have the answer? You have, no? You just now said 17,000. We also have its rival answer. We also have how much your Kia is selling. Kia is selling 8,500. Your Vitara is selling 10,000. Do you have that kind of data in power? If yes, then tell how much power is consumed in a day and what is the cost of that power. Okay. Guys, I will be back in a minute. Just hold on. I will be back. Just stopping this recording. Just back in. We'll be back in a minute. Okay. Yeah, guys. Sorry. Aniket, I have not received your news. Where is it? Sir, I've shared on your number. 1 second. Sir, Which number you can I have? present my news? 262. Sir, on the 262. number 262. I have not received it. Sir, can I present my news? 1 second. 1 second. Yeah, okay. Raj, 1 second. Extend Raj. Yeah, sure, sir. Raj, busy? You have to leave or something? Yes, sir. Actually, I have some work. Acha, okay. Go ahead. Yeah. Sorry, Raj. You would have told me now before. Sorry. Go ahead. Sorry, sir. So, yeah, hi everyone. So, this is news regarding tourism sector. So, especially for the Uttar Pradesh tourism. So, UP tourism push is a 1 trillion infrastructure-led demand engine driving structural hotel occupancy and mid-scale hospitality growth. Now, the UP recorded 47 crore tourist visits in 2024, led by Varanasi, 11 million visitors, plus 8.2 million year on year, and Ayodhya close to 16.4 million pilgrims, with hospitality investment in pipeline exceeding 1 trillion. This scale of religious and cultural tourism is structurally positive for hotels, food chains due to year-round and high volume demand. Now, the two companies which will be benefit from this demand is Indian Hotels and Lemon Tree Hotels. Indian Hotels, with a pan-India portfolio of 535 hotels, has a strong presence in Varanasi, Lucknow, and Ayodhya across Taj, Vivanta, and Ginger Hotels. IHCL currently operates at a 75 to 80% occupancy rate with ARR in the range of 11,000 to 12,500, supported by premium pricing and strong brand equity. Growth in UP is led largely by Ginger Hotels and Vivanta, while Taj's upside depends on sustained high-spend tourism and affluent domestic travel, making it a more selective beneficiary. Now, coming on to the Lemon Tree Hotel. Lemon Tree Hotel, with one of 105 hotel across India, is more direct play on UP's volume-led tourism. The company plans to add close to 14 hotels in Uttar Pradesh, strengthening its exposure to Ayodhya, Varanasi, and Tier 2 and 3 cities. Lemon Tree operates at a occupancy rate of 71 to 72% with an ARR of 6,000, making it well positioned to benefit from rising pilgrim and budget business travel. So the conclusion we can draw from this is that with tourism initiatives accelerating, IHCL offers stable branded upside, while Lemon Tree provides a higher operating leverage to rising occupancies, making both clear beneficiary of tourism growth in UP. Okay, great one. So Raj, that day also we were talking about the tourism, pilgrimage tourism in UP, and so you can also mention, Raj, that since ARR of Indian hotels is around 11,000 to 12,000 range, Lemon Tree falls in the perfect category of ARR of around 6,200, which caters the mass segment, whereas Yes. IHCL is for the premium one. Okay. Hmm. So Lemon Tree focus on Okay. volume-led growth, but yeah, Indian hotels focus on upper mid scale. Yeah, upper mid scale segment. Yes, correct. I think there are other hotels also who is planning to launch in Yeah, Lucknow. there are other, but the scale is small, so they're not. They don't get a massive benefit of this tourism. But yeah, what I found, Indian hotels and Lemon Tree are much more have an upper hand than those hotels. Correct. I think they will have the first move advantage. Yes. Yes, sir. Okay. Yeah, Ankit. Yeah. Yeah, Aniket. Sorry. Yeah, sir. Aniket. Yeah, which news have you sent? Sorry, I have not received it. I'm again high on them. Okay, fine. Go ahead. Yeah, sir. So I wrote two news. One is on Tata Motors. Basically, this Sierra launched. So they got a record 70,000 orders on the single day.
and like it's starting around 11.49 lakhs. And Tata Motors marks the single day biggest booking response for a passenger vehicle by making a 70,000 plus confirmed orders on day one. Around 1.35 lakh customers have already submitted preferred variants are in the process of completing the formalities. The car is positioned above entry levels like Hyundai Creta or Kia Seltos, and this boom indicates like the market in the mid-size SUV segment is growing. And I have the second news on the India-China exports. So the data came yesterday and it signals like there was a 90% growth in the exports from India to China and a 33% increase in April to November period. The export value also increased from 12.22 billion from about 9.2 billion, which was in last year. And India is the fourth largest, uh, like the China is the fourth largest country for India for exports and clocking about 4% of the total exports. The sectors which contributed to this jump was petroleum products, electronic goods, and marine products. And this strategic shift also signals like China is diversifying their imports, and emerging countries like India would be benefited. Coming to sectors which would be benefited would be like oil and refinery, EMS like the electronic manufacturing, metals and mining, marine and agro, and obviously the logistic sector. Coming down to stocks which would be benefited would be Reliance Industries, BPCL, Dixon, Coal India, Vedanta, Adani Ports, and JSW Infra. Okay. Okay. So it's an economical news. So nothing that we are tracking on it because it's a difficult sector to track. But yeah, good news, Aniket. Sorry, your Thank you. name was written as Ankit. That's why I was not getting it. Fine. Yeah. Okay, news. Okay. Good one. So Tata Sierra are only 70,000 bookings. Tata Motors is up 3% today. That's a big achievement. 70,000 bookings at the rate of around 10 lakh ki aati hai? Sorry, it is around actual price 10 lakh, 12 lakhs approximate. We'll take it 15 because as variant. There's 1,000 crores of revenue has been done in one day. That's that's a big move for Tata Motors. And so also the share surged around 30%, I think, since demerger from 12th November. Acha. No, I think this. Acha, okay, sorry. Even the CVs has increased. Both have increased. Yeah, CVs and the PVs. Yeah, it's been around. Even it has split into passenger vehicles. Acha, guys, the Tata Motor commercial vehicle is up. Passenger vehicle is flat today. So this is a part of the passenger vehicles. Okay, so keep an eye on that. The two parts. Now, Tata Motors CV is the commercial vehicles. Tata Motors PV is the passenger vehicles. So Tata Sierra comes into the passenger vehicles part. The CV is up 30% today. Okay. Nothing to do with the news of Tata Motors Sierra. Okay. Yeah, Darshan. Yeah, so I have covered the news on Tata Consumer, that is the Starbucks, and the same on Creta. But I have a Hmm. follow-up question on the same. Yeah. So, while analyzing these businesses, so what I found, if a company owns a majority stake, let's 30%, like Hero owns 30% in Ather, and similarly Hyundai also owns 30% in Kia. So, how this Hmm. relationship should be analyzed? Should it be considered as a competitors, collaborators, or something else? Collaborator, I will say. Nothing. We don't talk much about this competition because it is just about having a segment. Mhm. It is like saying, Darshan, you are investing into stock market because in Nifty because the market is growing. So I cannot compare you Mhm. with Reliance. I cannot compare with TCS. It's like Okay, that. Okay. So it's okay because it is just an investment. Collaboration understood. is just type of investment. So nothing to talk much about it. We don't know exactly how much revenue is coming. It is not even a JV. Yes. Collaboration means I will say something like let's say I am so I get calls from this companies Imaticas and Pristine and all. They say Rishabh will collaborate. And what are they saying? Okay, RK Mhm. Advisory collaborates with Imatica. So what will happen? My clients will be Mhm. their clients will be my clients. So it's just about
having Okay. probably to increase your market share. If let's say if 𝗖𝗹𝗹 is teaching CFA, and I don't teach CFA, so I get a request from you guys that sir, I also want to learn CFA, so I will transfer it to 𝗖𝗹𝗹. So something, so that is a collaboration usually. So you cannot judge Okay. things on that. Okay, Hero has invested in Athar, so it is type of investments. So Hero doesn't have anything that Athar is doing. It is just about helping. It is like Shark Tank people investing in startups. Or Hero Yeah, will but act as a mentor for Athar. they own around 30% and they have also their EV products, right? VIDA. And so instead of having Yeah, that, yeah, they also have that. So yes. that's what I said now. It is like an investment. You have invested. You are Hero. You have invested in Athar. If Athar grows, you will also grow. But that is from an investment point of view, not from a company perspective. It has not. Yeah. It is not impacting your sales. It is not impacting your profitability. Unless and until JV like owning 50% or more than majority Until control. yeah, yeah. Okay. Because Starbucks is a But JV now. Sean will say. Okay, Sean has this news. Sean, so that is a JV that that you actually talk about. Okay, because if Starbucks is making profit, that profit will be reflected in Tata Consumers. Yes, sir. Should I yes. present the news? Yeah, yeah, Sean. So the news is that Starbucks, which is a joint venture with TCPL, has decided to change its strategy for India. So it will the first store was around in 2012 when Starbucks initially was following the premium approach where all its products were priced very premium compared to rest of the market. But the managing director and the head of the Starbucks are getting a feeling that that market has kind of saturated, and the losses also in FY25 have almost become 135 crores compared to 82 crores last year. So the change in strategy is that they're planning to launch. Just one second. They're planning to launch basically inspired from Domino's, Decathlon, and Skechers, where the price point of the new products or new outlets would be on the lower side. So they might start smaller stores, which will involve lesser capex, and that would be the new growth engine for Starbucks, because in India they're getting a feeling that all the other competitors are undercutting them, and apart from that, TCPL, because it has 50% investment, essentially takes 50% of the loss every year. So for TCPL, I think if the strategy becomes successful, eventually their income statement and balance sheet will improve. Yeah, I think TCPL will also start selling Starbucks coffee from Star Bazaar. Star Bazaar actually is selling products of TCPL. So Yes. Star So Bazaar is a part of Trend. okay. So at the moment, it has 80 across 81 cities. It has 500 stores, but it feels now the market is getting saturated because Okay. the existing stores only are not going as per their plan. So they are going to start start lowering prices for mass reach. Mass reach, yes, yes. They have started actually. If you get coffee at 100 rupees and 200 rupees nowadays in the Starbucks, but still it is expensive. You Yes. get So I 100 think rupees for a small cup. so. I knew about TCPL, but the Star Bazaar thing I was not aware of. What you mentioned. Yeah, yeah. So they also no Starbucks. I was saying that they might do something like this if they sell it in a very cheaper brand. Yes. Mass thing. I was just assuming that they might do also. Okay, okay. Yeah, Om. Om. Good one on the real estate part. Yeah. Yes, yes, sir. Uh, um, Yes, sir. Sir, so my news is about foreign universities. So for foreign universities are planning to set up their universities in India. So they are about to cater around 5,60,000 plus students by end of 2040, and they're planning to set up over 19 million square feet of education linked real estate demand. So their main focus is on cities like Delhi, Bangalore, and Mumbai, and the prominent real estate companies which are going to benefit from this uh, university setup are DLF, Lodha, and Mumbai. Sorry, DLF, Lodha, and Prestige Group, because they have a good presence in those cities. Also, DLF Lodha and Prestige Group. Okay. yes, uh,
this is not written in the news, but I have researched. Also, Hmm. by setting up these universities, we are about to save around 113 billion in forex. And uh, in India, uh, we have 155 million people currently in higher education, and this will grow to 165 million by 2030. Also, there are around 40 potential Indian cities uh, which will get foreign universities set up. Also, Maharashtra government has signed a letter of interest with 5 such foreign universities like Aberdeen University, University of York, University of Western Australia, Illinois Institute of Technology, and Instituto Europeo de Design. They are going to set up their universities in Navi Mumbai mostly. Also, Okay. this will help hospitality sector as well. Also, foreign students studying in India in 2019-20 were 49,000, which went up to 72,000 in 2025. That's all. Oh, okay. Okay. So Delhi, NCR, Bangalore, Mumbai led the readiness as the state rolls out large education. Okay, great Yes. news, great news to at least track that this all things are also impacting the real estate sector. Yes, sir. Yeah, there's no data specific in this, but okay, a thing to look at, okay, at the back of your mind that this is also driving the real estate demand in India. It's not Yes, sir. only the buying. Also, sir, the hospitality sector as well, because when the foreign students come in India, they don't directly have anything to Stay, stay. So so the they prefer more nearby hotels also get demand. demand. Okay, yes, yes. Okay, great. So the one more was, that hotel sector, that this demand can also come from foreign students. That is, Yes, that sir. is सर तो well, जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आ रहे हैं ये सब तो mm, मतलब यूएस या यूरोप ये सब से तो नहीं आ रहे, ये सब वो छोटे कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज से वहां से ही आ रहे हैं ना मोस्ट ऑफ तो। हाँ हाँ हाँ, तो सर ठीक उनके है ना, पास तो उनको उतना क्या है, परचेसिंग पावर भी नहीं होता है। ये तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर तो बढ़ रहा है ना. See, whenever you go to any other different country, probably you are rich. Even if India, इंडिया से अगर कोई बाहर जाता है, ऐसा तो होता है उसके पास तब बाहर जाता है, राइट? ऐसा नहीं यस। नहीं है. इवन इफ यू गो टू बांग्लादेश, पैसा तो लगेगा ना तुम. हम्म। It is just about, and if the universities are set up, majorly the news was about university setting up in India. Foreign students is one part. They are staying out, so that can also increase a Yes, demand sir. a bit. Yeah. Sir, Yeah, Ankit. for sir, I have a one question regarding universities. If foreign Mhm. universities set up their colleges over here, it will also impact the current good universities like IIM, JB, IMS and all. Footfall will also fall from their No, university but or we not? are not talking about that. No, we are talking about the increase in sales. Okay, so उससे now बाकी I'm को क्या just फर्क पड़ता है? उससे रियल एस्टेट इज ग्रोइंग ना. okay, sir. हाँ, so that we are not talking about the competitors here. We are talking about the real estate sector. Yes. Yeah. Yeah, Ankita. Yes, sir. So, हाँ. my news is regarding the India's travel boom in 2025 is being driven mainly by the Gen Z travelers. So, the travel bookings by Gen Z travel have jumped by around 650% as young people are traveling more often. So, there are the lower flight prices, budget hotels, and affordable travel packages are making trips easier for them. And within India, new places like Varanasi and the Andamans have seen about 20% growth, along with the rising solo trips and work from holiday travels. So, there will be a rise in hotel bookings in the mid-range hotels like the Lemon Tree hotels, also the upper mid segment like the Vivanta and the Ginger hotels. Yeah, Okay, so that Vivanta was and in, Chinno. Okay, okay, yeah. great. Okay, okay. One more on the hospitality sector again. Vivanta and your Lemon Tree. Lemon Tree is in focus because obviously it is have a lower budget hotels. Yes, sir. Okay, good one, Ankita. Ankita, why don't you make financial models, reports?
So I have covered two models for the IHCL and Chalet. Remaining two are remaining. But And what about the auto report you made in September? Then what about October, November? We are in December now. yes, I have made those also, but I didn't got the time to present it. So you have done with the MBA? Yes, sir. Now what are you doing now then? So I'm preparing the company profile for the hospitality sector, because I'm punching the numbers on the Excel right now. So that is remaining for two hotels, and two hotels model is remaining, sir. It should be done now quickly. Yes, sir. I will complete it. Yeah, complete it as soon as possible. Yeah. Yes. Abhishek. Abhishek. Hello. Good Yeah, morning, sir. yeah, Abhishek. Sir, I wrote a article on margin trading facility. Why? Sir, sir, and I wrote that article, so it talked about that the growth of MTF is slowing down, and the number of investors are also dwindling, but the books are at record high. So I gave my analysis on that. So which stock should I buy? Sir, it does not talk about a particular stock, this article. Then you want to be a journalist or you want to be an analyst? So analyst. पेपर बनाना है तो फिर खोल सकते हैं न्यूज़ की सर हाँ बस मैंने कुछ तो पढ़ा आज when I go out and I see something has happened in my society and I'm talking about it, you know, किसने उसको चिल्लाया, I got entertained. So if there's no analysis, no stocks, then no point talking on it. No point reading also on it. Update is fine. Okay, fine. You have read it. Good thing. This is all copy paste that you have written. There's no analysis in this. Okay, guys. So I think good discussion today. Nothing much to talk about. So guys, those who are not able to get it, it will take time. Takes time. See, Avinash was not doing today. I was quite impressed with his, how he presented it. Analysis. See, always think about analysis. Don't think about reading Thank you, sir. newspapers. Welcome, Avinash. Don't think about reading newspapers. It is about analyzing it. And from the newspaper, you just have to take the data points. That is what we read newspapers for. One is something. So if you have to talk something, obviously you need to read newspapers. Now, when you read newspapers, you have to analyze that what will be its impact, what will be its future impact, what you think will be its impact, or probably something like uh, how can this help to improve my financial knowledge? Let's say if the company is acquiring something, and at what price it is acquiring, what price it is selling, how much productions are they doing, something like that. And if you have a news, have an update now, link it with something which will actually help me to talk about a stock. Because at then it should be talking about the stocks. And stocks also, you should be in specific that those stocks should be your products that you use on a regular basis. Do you know the products? You know the differences? There are competitors. Don't talk about monopoly companies. Don't talk about metal companies. Don't talk about power. These are all commodities. If you don't understand a company, if you write a news about any company, I will first ask you, what is the price of the product that it's selling? Because as an equity owner, you need to know the products, the pricing, and its competitors. If you're not knowing at least these three things, there's no point talking about a business. Even IT sector. I was personally an IT analyst, but I never track IT industries. Not even I recommend anyone to track IT industries. Very difficult. You don't know only what TCS is doing. Yeah, Sanchit? Yes, sir. Today I shared some financial model. So, sir, I have some doubt. Can you please? What is the problem? Jit? सर मेरा जो डीसीएफ का वैल्यू आ रहा है वो सर जो एक्चुअल करंट प्राइस से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है सर तो रेशियोस फॉर्मेट किया क्या हमने बोला रेशियोस करने को रेशियोस किए ये सर किया है सर और सर उसमें एक लीज लायबिलिटी का सर जैसे जीसीपीएल का मैं कर रहा था तो सर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं वो भी थोड़ा डाउट है जीसीपीएल के लीज लायबिलिटी वाले इसमें जीसीपीएल के यस सर जीसीपीएल क्या प्रॉब्लम है
सर मैं उसमें देख रहा था कि इंटरेस्ट जो आ रहा है ना ऑन लीज लायबिलिटीज, वो सर मैं उसमें फाइंड नहीं कर पा रहा, तो मैंने डाटा पंचिंग किया है। जब प्रिंसिपल जो उसका पेमेंट है वो तो मेरे को समझ में आ रहा है उसमें, लेकिन इंटरेस्ट का समझ में नहीं आ रहा सर। उससे पर हम इंटरेस्ट का रेट लेने में प्रॉब्लम आ रहा था। पर वो तो तुमको इसमें शेड्यूल में मिलेगा ना उसका इंटरेस्ट। पर ठीक है, ऐसी लीज लाइबिलिटीज इतनी इतनी कम नहीं होता, ठीक है अप्रोक्सीमेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लीज में। इट इज जस्ट अ पार्ट। तो अगर देखना ही है तो वो तुमको एनुअल रिपोर्ट में जाके फिर देखना पड़ेगा कि लीज लाइबिलिटीज में कितना इंटरेस्ट आता है। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना तुम्हारा पीएनएल में, उसका भी एक शेड्यूल होता है। तो वो शेड्यूल में जाके तुमको डेट देखना शेड्यूल। होगा नहीं नहीं, इंटरेस्ट का शेड्यूल जो पीएनएल होता है ना, यस सर, यस पीएनएल सर। जो होता है, पीएनएल में इंटरेस्ट होता है ना पार्ट, तो इंटरेस्ट का भी एक शेड्यूल होता है अलग से। वो इंटरेस्ट का आइटम ठीक है आएगा सर। अलग से, ओके। एग्जैक्टली कहाँ से है, तो वो सब ठीक है। मतलब क्या, इट इज नॉट मतलब सर ठीक है, मैं इट ये इज पूछ नॉट रहा था सो सर, इम्पोर्टेंट। हाँ सर मैंने 4 फाइनेंशियल मॉडल बना लिए सर एफएमसीजी कंपनी के। तो सर ओके। मेरे को ऑलमोस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग तो आ ही गया है सर अब। तो तुम आते क्यों नहीं हो तुम कॉल पे? फिर फाइनेंशियल मॉडल आना तो इट इज अ गुड थिंग दैट यू आर नोइंग, बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई आर यू नॉट कंसिस्टेंट? बिकॉज हमको इंटरव्यूज में फाइनेंशियल मॉडल बनाने आता है ये नहीं बोलना है, हम क्या कर रहे हैं वो बताना है रोज ऑन अ डेली बेसिस। मॉडल तो एआई 10 सेकंड में 10 सेकंड में बना देता है। तुमने वो लर्न किया, अप्रिशिएट। अभी आगे क्या? जैसे तुम हो, मैं 500 स्टूडेंट को सिखाता हूँ, 500 स्टूडेंट को आता है फाइनेंशियल मॉडल बनाना, तुमको क्या लगा रहा है? समझ रहे हो? व्हाट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नोइंग अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मॉडलिंग? जैसे टीसीपीएल का तुमने बनाया है, ये देख रहा हूँ मैं तुम्हारा टीसीपीएल का, उसमें तुम्हारा रेवेन्यू ब्रेकअप है ही नहीं। रेवेन्यू ब्रेकअप जो है सिर्फ गुड्स और रॉयल्टी इनकम है, कहाँ से आता है टीसीपीएल का रेवेन्यू? मैंने क्वार्टरली रिपोर्ट भी डालने बोला था, क्वार्टरली पीपीटी कहाँ पे है तुम्हारा? सर क्वार्टरली एंड में है सर, क्वार्टरली। वो नहीं, ब्रेकअप किधर है उसका? ब्रांडेड बिजनेस में क्या क्या आता है इंडिया के ब्रांडेड बिजनेस में? इसका इसका रिपोर्ट किधर है? कंपनी का मॉडल तो बना है, अभी कंपनी रिपोर्ट समझाओ मुझे, कंपनी क्या करता है टीसीपीएल, समझा तुमने? प्रिंसिपल वही सर, वही मैं रिपोर्ट राइटिंग सर स्टार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ सर उसी को, सारी तो कंपनियों वो है से। ना, मॉडल के साथ रिपोर्ट भी तो इम्पोर्टेंट ना, कहाँ का सभी। जैसे तुमने लिखा यस है सर, इंडिया, यस। इंडिया बिजनेस में क्या क्या आता है, उसके कितने सारे प्रोडक्ट्स है? वो तो हमने एक सेशन में किए थे, कितने सारे उसका ब्रेकअप किया था इंडिया बिजनेस का। यस सर। इतना अच्छा बनाते हो तो फिर सी अपडेट तो करो इसको, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करोगे तो इतना अच्छा तुमने बनाया, अभी 4 कंपनी में अच्छा बनाया तुमने, फॉर्मेटिंग भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बट ये सभी कर रहे हैं ना, ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। तुम अलग क्या कर रहे हो? मतलब तुमको ये क्लास में भी स्टैंडर्ड है, 30 लोग है कॉल पे, तो 30 लोग से तुम अलग कैसे हो? तुम ऐसा क्या न्यूज़ दे रहे हो जो बाकी सब नहीं दे रहे? अगर बाकी सब भी वही दे रहे हो जो तुम दे रहे हो, तो यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ। तो फिर सबको ही जॉब मिलेगा। फिर पता है जॉब किस पे आएगा? तुम्हारा एजुकेशन क्या है, तुम कितने क्वालिफाइड हो, तो फिर उस पे आएगा। तुम बोलोगे सर मैं एमबीए नहीं हूँ टॉप टॉप कॉलेज से, तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं सीएफए नहीं हूँ, तो फिर वो चीज़ पे आ जाती है कि स्किल्स तो सबके पास है आजकल, मतलब क्वेश्चन इज एक्सपीरियंस, वो किसी के पास नहीं। एंड वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से आता है। आज टाटा मोटर आज आया टीसीपीएल का, वो स्टारबक्स का क्या ट्वीट करोगे तुम्हारे रेवेन्यू में, बताओ स्टारबक्स का रेवेन्यू कितना आता है तुम्हारे पास डेटा? तो उसको जॉइंट वेंचर इसलिए सर हाँ तो प्रॉफिट आपने कितना आता है? कंसोलिडेटेड बोला था, इसलिए तो सर मैं प्रॉफिट उस कितना आता पे। है? ना आंसर तो है कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कितने जॉइंट वेंचर से कितना कमा रहे हो? वो किधर है तुम्हारे मॉडल में? या तुम्हारी इसके लिए रिपोर्ट लगता है ना, इसके रिपोर्ट लगते हैं फिर, जिस मॉडल में नहीं है वो रिपोर्ट में दिखती है। ओके, अच्छा बना है तुमने, जो भी बना है इट इज गुड। ये तुम्हारा जो ये आ रहा है कम आ रहा है, ये टाटा टीसीपीएल में ना डीसीएफ चलेगा ही नहीं, क्योंकि डीसीपीएल इज ग्रोथ कंपनी, तो वो डीसीएफ करना ही मत, जी उधर सर, पीपी, उधर ईवी बाई EBITDA ही सारी चलेगा। कंपनियों में ही मेरा बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। जो एफएमसीजी की 4 कंपनी है सब में ही डिफरेंस आ रहा था। बट तुम्हारे इसमें टीसीपीएल में रेशियो इतने 7% क्यों आ रहे हैं? आरओई तुम्हारा 7% है क्या आरओई? कैसे 9 इंटू टीसीपीएल का 7% है आरओसी? इतना कम थोड़ी होगा टीसीपीएल का।
नहीं इतना ही है 5% भी अच्छा। इस TCPL तो आएगा नहीं तुम्हारा उस पर। तो बोला ना DCF तो सब कंपनीज पे यूज होता ही नहीं है। ग्रोइंग कंपनीज में अगर तुमने कैपेक्स हैवी लिया है तो DCF यूज ही नहीं होगा। ईवी बाई बेटा रिलेटिव बैलेंस पे यूज होता है। DCF सिर्फ करके रखना होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके। एंड सर TCPL तो मैंने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, 30% ग्रोथ होगा। तुम्हारा ये assumption आया कहाँ से? कितना परसेंट ग्रोथ लिया तुमने? 11%। नहीं सर, वही मैं पूछ रहा था। जैसे मैं सर मॉडल बना के एक चीज समझा कि इसमें एजम्पशंस एक्चुअली मैटर करेगा कि आप क्या एजम्पशन ले रहे हो, उस हिसाब से वो कंप्लीट। अभी तो सर मैंने जस्ट लाइक ये हम्म। हिस्टोरिकल या एवरेज लेके ले लिया है एजम्पशन इसलिए सारे। बोले हाँ। वही ना, क्योंकि अभी तो जो ये है तुम्हारा TCPL इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 30%। तुम तो 11% ही ले रहे हो। तो इसके लिए वो फिर रिपोर्ट और एनालिसिस करना होता है। TCPL का तुम कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे तो ही इज एक्सपेक्टिंग टू ग्रो बाय 30%, और उसके सेगमेंट्स है वो अलग अलग। तुमने सीधा 12% ले लिया है। ठीक है, मतलब ये हाँ रॉन्ग सर कुछ नहीं वही। है। मतलब ये रॉन्ग कुछ नहीं है, बराबर ही है। बट फिर तुम्हारे अजम्पशन ही रॉन्ग है ना। फिर तुम सिर्फ मॉडल बना रहे हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? ये तो अभी इसके लिए रोज आओ करो ना। तुम आते नहीं हो कॉल पे, लिखते नहीं हो, तुम पेपर नहीं पढ़ते। कल उठ के यही पूछेगा तुमने आरके एडवाइजरी में क्या किया। तुम बोले मॉडल बना, वो तो सभी बना रहे हैं, तुम अलग क्या बना रहे हो? ऐसा होगा, क्वेश्चन यही पूछेंगे इंटरव्यू में, तुम अलग क्या कर रहे ये सर मैं भी स्टार्ट करता हूँ न्यूज लेटर राइटिंग। हो? हाँ करो। और सर उस सारे साथ में प्लस वो रिपोर्ट राइटिंग भी कर लेंगे। फुट राइटिंग में तुमको कंपनी पूरा समझाना है मुझे कि TCPL का मॉडल बना है, अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। वन टिक ऑन योर CV कि चलो अभी तुम एलिजिबल हो गए। और अभी तुमको कंपनी भी समझाना है मुझे। यस सर, यस सर। ऐसा है। ठीक है, क्योंकि कल उठ के मेरा फ्रेंड मुझे रिक्रूटर्स मुझे ये पूछेंगे उसका मॉल बनाना आता है, बोलता है हाँ संचित को मॉल बनाना आता है। और क्या करता है वो? कंपनी समझता है उसको, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ता है, अपडेट रखता है खुद को। तो ये क्वेश्चन आएंगे फिर। अभी उसके आंसर क्या है? तो उसके आंसर है तुम्हारे लिंक्डइन के पोस्ट कि देखो सर मैं अपडेटेड हूँ, सिर्फ मॉडल नहीं बनाता हूँ मैं। मॉडल बनाना तो एकदम आधे घंटे 1 घंटे का काम है। ऐसा। हाँ सर, जितना प्रैक्टिस होता है उतना टाइम रिड्यूस ही होता जा रहा है सर मेरा भी। हाँ, बोला ना मैं आधे घंटे में बना सकता हूँ। वो भी बिना किसी, वो भी मेरे को नंबर दे दो, मैं आधे घंटे 10 मिनट में बना दूं मैं तो। अगर मुझे नंबर भी दे दो तो मैं तो नंबर के साथ बोल रहा हूँ आधे घंटे में। तो ये अभी बट क्वेश्चन है कि मैं बना के वैल्यू ऐड क्या कर रहा हूँ मैं? जैसे अभी ऐसे तुम और मैं हो, दोनों इंटरव्यू को जाते हैं, मुझे आधे घंटे में आता है, तुमको 1 घंटे में मॉल बनाना है। तो अभी कौन सा रॉकेट तुमने देख लिया, कौन सा रॉकेट सेंसर में बनाने में? कंसेप्ट ही थे बेसिक। अभी तो और 2-3 बनाओगे तो और इजीली हो जाएगा। बट अभी मॉडल में तुमने कितना डीप गए हो, कितना तुमने बिजनेस को तोड़ा है। तुमने तुम्हारे कॉन्फ्रेंस कॉल्स और जो पढ़ते हो न्यूज इसमें, तुम्हारे आर्टिकल्स में, वो कैसे तुमने इनकॉर्पोरेट किया है मॉडल्स में तुम्हारे? तुमने कुछ लिखा है क्या, अपडेट्स लिखे हैं क्या? अगर तुम बोलते हो कि सर मुझे नहीं लगता ये ग्रोथ होगा, बट सर ये न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो किस पे लिखते हैं इसे? ये न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि 30% ग्रोथ होगा। कि मुझे पता है ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, 30% ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड है इसमें। क्वार्टरली नंबर्स देखोगे तो तुम 11% तो बहुत कम हो गया तुम्हारा। 2 क्वार्टर में ही उतना हो गया। तुमने पूछो, तुमने 11% लिया है। 18,000 ना, 17,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ, चलो 19,000, 19,000 डिवाइड बाय 4, इट कम्स अराउंड 4.75। 4 पॉइंट तो 5,000 तो अभी पहुंच गया ये। इसका 10,000 तो अभी सेल्स हो गया अप्रोक्सीमेट। तुम बोल रहे हो आगे अगले के 4 क्वार्टर में सिर्फ 4,000 ही होगा, और इससे भी कम होगा, ऐसे तुम बोल रहे हो। समझ रहे हो? तुमने assumption किया है। तुम बोल रहे हो 19,000 होगा, तब तुम बोल रहे हो कि ये 5,000 इतना हो गया, अभी इतना ही रहेगा, बढ़ने वाला है नहीं, ये तुम बोल रहे हो। नहीं सर, मैं बताया अभी तो एजम्पशन जस्ट लाइक मैंने एवरेज हिस्टोरिकल वैसे हाँ लिया, ओके। नॉट वैसे क्योंकि एफएमसीजी का मैं एक न्यूज पेपर पढ़ा था, उसमें 10 to 12% उनका आ रहा था जो ग्रोथ है इस बट हिसाब से। उसके वही तो बोल रहा हूँ कि टाटा कंज्यूमर्स के अलग अलग सेगमेंट्स है, वो अलग अलग रेट पे ग्रो हो रहे हैं। यस सर, यस ऐसा सर। है, ऐसा है। ठीक है, करो, अच्छा बना है वैसे, नो डाउट, इट इज गुड। ठीक ठीक है है, सर, DCF मैं में देख। रिपोर्ट राइटिंग पे, रिपोर्टर में यस सर, फोकस करो, रिपोर्ट हाँ। राइटिंग पे वर्क स्टार्ट करता हूँ, सर साथ में न्यूज लेटर। और हाँ, रोज कॉल पे भी आना। और यस सर, यस सर। थैंक यू सर। क्या बताओ, क्या उम्मीद? Hi, sir. Good morning.
गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था कि सर अब इफ वी हैव टू अपडेट अवर resume, so we should have a NISM certificate ना सर? तो sir, I am watching your lectures on NISM, but sir, there are only 5 lectures on YouTube. हाँ 5 ही है। हाँ मैंने वो उसके बाद मैं नहीं लिया था बिकॉज आई वाज नॉट वेल, वापस चालू नहीं किया Okay, गया। sir. So sir, how can I give in if I'm planning to give between 5 to 10 January? So sir, what should I do? हेलो। बुक्स है ना उसके NISM के, यू गेट इट ना, PDF मिल जाता है गूगल पे, तो हाँ PDF सर, ही वो पढ़ना तो है। है। हेलो। हाँ सर, हाँ हेलो। सर, हाँ सर, हेलो। हाँ ओके सर, सो हेलो। हाँ हाँ ओके, PDF ही है, सिंगल PDF ही है। ओके अभी सर। मॉडल्स और बनाना, सर मॉडल्स वो, बनोगे ना तो आधे चीजें समझ में आ जाएगी तुमको। मॉडल्स हाँ जब नहीं बनाओगे सर, ना मेरा मॉडल्स तो आधे। FMCG के एक्चुअली से 3 कंपनी के रेडी थे, पर सर एक में नेस्ले था, तो आपने बोला नेस्ले का कोई रेलेवेंस नहीं है, सो वी आर काउंटिंग ओनली हाँ 2, TCPL एंड ब्रिटानिया। सर उसका तो हाँ कंपनी प्रोफाइल भी हाँ। रेडी था, और नेस्ले का सर मैंने आपको एक एग्जांपल हम्म, भेजा था पहले, पर सर उसमें क्या वो हम्म, ट्रेंड लाइन मुझे पहले नहीं आया था, वो लेक्चर में मुझे मिला नहीं सर। वो जैसे निफ्टी के साथ अपने स्टॉक का 1 साल का जो क्या ट्रेंड है ना सर, हाँ हाँ वो सर हाँ चार्ट बाकी हाँ। था, तो मैंने सीखा, ठीक है। तो अब वो ऐड अच्छा करना बाकी है सर। एंड सर बट नाउ आई एम स्टार्टिंग होटल इंडस्ट्री सर, सो उसके हम्म, लिए सर मैं नई बैच की वेट करके सर जो पुराने लेक्चर्स है वो आई शुड वॉच। वही करना। आई थिंक ये 14 में वही चल रहा है, EM 14 हाँ में इसलिए, 3 से 5 हाँ बजे, सॉरी 3 to 5 वही चल रहा है। यू कैन कम 3 to 5 ना, वही सैटरडे संडे ना सर। सैटरडे संडे। हाँ 3 to 5, यस वी आर स्टार्टिंग विद हाँ रिकॉर्ड क्योंकि मंडे। सर हाँ उसका फिर मैं कौन से सीक्वेंस में लेक्चर चालू करूँ सर, वो मेरे लिए सर बहुत केओस हो जाता है, तो ये मिक्सअप EM 14 बहुत। के ना, EM 14 आई थिंक वी स्टार्टेड विद ऑटोमोबाइल, पर सॉरी सर विद ये हॉस्पिटैलिटी। हाँ 14 अभी सर ये सैटरडे संडे का सर लेक्चर नहीं था ड्राइव पे सर, मैंने नहीं देखा था। था। हाँ हाँ ये नहीं था, ये सैटरडे संडे में खुद बीमार था। यहाँ अच्छा, से ओके यहाँ से सर, हॉस्पिटलिटी, ओके यहाँ से हॉस्पिटलिटी ओके। पे है सब। अभी देख रहा हूँ तो दूध नहीं भर रहा है, 10 मिनट EM पहले। 14 नहीं, सॉरी EM 14 नहीं, EM 13, दिस वन EM 13 है। ओके सर, मेरा यहाँ से है, मॉडलिंग ओके मॉडलिंग का सर। है, तो तुम यहाँ से बीच में मैंने कहा से तो आई हैव स्टार्टेड विद हॉस्पिटलिटी, ये इधर ही था रेशियो का, तो। हाँ रेशियो वो हाँ सब बाकी है सर, हाँ। हाँ तो यहाँ से देख क्योंकि लेना। मॉडल का तो सर एक बार डेटा पंच और जो होता है वो तो सेम ही होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक हॉस्पिटलिटी का ही ट्रैक किया, साले का तो यहाँ पे दिया भी इसी। और सर एनआईएसएम का अपने ड्राइव में एक डे 8 का या तो लेक्चर 8 है सर, वो भी देख लूं क्या? NISM का कहाँ पे, ड्राइव में नहीं है NISM। सर एक एनआईएसएम का है शायद, हाँ ये एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट है ना उस, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये होगा उसमें एक है डे नाम तो 8 सब का। मिलता है। हाँ ठीक। अच्छा हाँ वो बाकी सब तो इस पे डालो ना, मैंने यूट्यूब पे डाला है। यूट्यूब पे से 5 लेक्चर से सो 3 मैंने देखे सर, तो मैं सोच रही थी सर कि जनवरी के 10 डेज में शुरुआत में वो एक बार निपटा दूं सर, ऐसा तो आई कैन सेंड रिज्यूमे। यस यस। ओके चलो सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बी कंसिस्टेंट। तुमने यस ये सर, यस आज लिखा है, न्यूज़लेटर लिखा है, काफी बड़ा है इतना इतना बड़ा नहीं होता है। 3 लाइन ओके बोला सर, ना, 3 से ज्यादा लाइन नहीं लिखना है। हेडिंग इतना बड़ा ओके थोड़ी सर। होता है, एक हेडिंग 1 लाइन का हाँ होता है। सर मुझे लगा, पर सर आप बोलते हो ना हेडिंग में सर डेटा पॉइंट भी हाँ होना हाँ चाहिए, दैट्स वाई मैंने वो ऐड किया सर, नहीं तो तो एक अदरवाइज ही मैं कोई नीचे लिख। तो एक ही कोई ओके डेटा पॉइंट, ज्यादा सब डेटा पॉइंट नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सब डेटा पॉइंट नहीं लिखना है। हाँ तो सिर्फ जो मेन फोकस कंपनी है उसके बारे में लिखना चाहिए। हाँ हाँ। और ये कंपनी का ओके नाम सर। अर्बन कंपनी। अच्छा अर्बन अर्बन कंपनी कंपनी सर का। मेन फोकस है उसका, सर दूसरी दो है उसका एक्चुअली में लिस्टेड नहीं है, तो उसके बारे में सिर्फ 1 लाइन होती है। अच्छा वो लिस्टेड अभी इंडिया में नहीं है, पर सर वो कंपटीशन में है इसलिए। नहीं नहीं, हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा फोकस नहीं करना है। सर्विस इंडस्ट्री पे मत फोकस करो, प्रोडक्ट इंडस्ट्री पे फोकस करो। हाँ ओके सर, एक्चुअली सर ओके। ईवी पे बनाने वाली थी, पर सर मुझे लगा कि सर अभी कार का और ईवी का और सब बहुत है, तो मेरे को सर थोड़ा दूसरे साइड में फोकस करें ऐसा नहीं नहीं एक नहीं, बार। एक ही फोकस रखना है, एक दो ही फोकस रखना है। ओके सर, देन ओके। ओके होटल ओके। ऑटोमोबाइल एंड एफएमसी। होटल ऑटोमोबाइल FMCG एंड तुम्हारे अगर रिटेल में कुछ आता है तो अबाउट हाँ फैशन रिटेल में, वाला, हाँ फैशन, फैशन हाँ हाँ फैशन वाला। हाँ फैशन। ओके सर, डन सर। ओके ओके। हाँ ओके सर, थैंक यू।
यहाँ से देखिए। मेरा एक छोटा सा डाउट था सर, ये एनआईएसएम सर्टिफिकेट कौन से लाइक करने होते हैं जो फायदे होते हैं? NISM 15 है जो तुम कर सकते हो, 15। एंड सर वो एक, अच्छा बस 15? 15 है एडवाइजरी, ए इन्वेस्ट मतलब 10 है, 10 भी एडवाइजेबल है करने को, मतलब करके रखो तो अच्छा है, बट 15 इज मैंडेटरी, ऐसा है। ओके सर, वो एडवाइजरी वो तो सेबी के मतलब रजिस्टर्ड एडवाइजर बनने के लिए यूज होते हैं क्या? बट उसमें ना जो क्या होता है, उसमें जो तुम्हारे टॉपिक्स होते हैं ना, वो काफी तुम्हारे इंटरव्यूज में काम आ जाते हैं। ओके सर। ऐसा है मतलब अगर तुम इसमें जाते हो, कोई PMS में जाते हो, तो एडवाइजरी का लोग मांगते हैं कि तुमको एडवाइजिंग करने आते, बिकॉज इक्विटी में भी दो पार्ट है ना, बाई साइड सेल साइड। तो बाई साइड राइट यूजुअली सर। इज एन एडवाइजरी पार्ट। तो एडवाइजरी फर्म्स भी होते हैं ऐसे, कि एडवाइस कैसे करना है क्लाइंट को, क्योंकि अगर तुम क्लाइंट से बात कर रहे हो तो हाउ शुड यू एडवाइस का पोर्टफोलियो देखना होता है, तो वो सब एक्चुअली CFA का पार्ट होता है। वो A और B में, अगर CFA नहीं है तो अज्यूमिंग कि वो दोनों पढ़ लो, ऐसा है। ओके एंड सर, बाई साइड किस में जाने के लिए सर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए रहते हैं क्या इक्विटी रिसर्च के लिए? नहीं नहीं, सेम ही होता है, रिसर्च तो सब जगह सेम ही होता है। लेकिन सर मैंने सुना है कि बाई साइड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बाई साइड में एक्सपीरियंस लगता है, इसके लिए मुश्किल होता है। ओके सर, कि थैंक यू। बाई साइड में तुमको कोई सिर्फ रिसर्च करने के लिए पैसे नहीं देगा, तुमको एक्चुअली बोलेगा कि अरे भाई रिसर्च करके स्टॉक को लो, पैसे कमा के दो हमको। ओके सेल साइड पे ऐसे नहीं, सेल साइड पे सिर्फ तुम्हारा अपडेट ही होता है, क्योंकि तुम क्लाइंट के राइट। लिए काम करते हो, तो इसलिए सेल साइड पे मिल जाता है। हाई साइड पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आजकल मिल जाता है, बट सैलरी कम होती है, ऐसा है। बट लेकिन ग्रोथ फिर बाइट साइड में ज्यादा रहता है, क्योंकि फिर वो वहाँ पे आप नहीं अकाउंटेबल रहते हो, राइट? नहीं, तो वो नहीं, ग्रोथ सेल साइड में ज्यादा होता है, सैलरी इनफैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हाँ बाई साइड होता है। स्टॉक मार्केट रिसर्च तुमको ज्यादा जो होता है, एक्चुअल रिसर्च होता है, वो बाई साइड पे होता है। सेल साइड पे थोड़ा ऐसा अपडेशन का रिसर्च रिपोर्ट होता है, रिसर्च होता है कि तुमको चीजें ऐसा अपडेट करनी है, ऐसा। बट पैसा सेल साइड में ही है, बाई साइड में नहीं है पैसा। बाई साइड पे हम तब ओके जाते हैं जब तुमने बहुत पैसा कमा लिया, अभी तुमको पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए तुमको नॉलेज चाहिए, तो वो नॉलेज के लिए हम बाई साइड जाते ओके ओके हैं। ओके सर, थैंक यू। Sir, hello. Yes, So my chat is not working. chat is not working. Why? Not able to see chat and message. No, everyone can see. I have not hide anyone. This is an open. I'm sending you a chat. So still I did not get the NISM drive access. NISM, Yes, sir, lecture drive. NISM के कोई लेक्चर नहीं ड्राइव मतलब लेक्चर्स की जो वीडियोस थी ना वो वाली। है। लेक्चर्स की वीडियो, ओके। एक बार मैसेज आ रहा ना, अभिषेक विल रीच आउट टू यू। जी सर। अमित त्रिपाठी ना? जी सर। एक सेकंड, आईडी क्या नहीं, ऐसा मुझे आया था, कल ही भेजा क्या तुमने? जी जी। तो रिफ्रेश कर दिया मैं। एक सेकंड, यहाँ पे होगा, एक सेकंड, लेट मी सी। Sir, can I share the format of news? One second. ठीक है अमित, एक बार वापस भेजो ना, क्योंकि दिख नहीं रहा है मुझे। अमित अच्छा, साइकिल बाय तुम हो गया? अच्छा, मुझे लगा किसी और का है, इसके लिए नहीं किया। ओके ओके, अडोई कर दिया सर। Sir, can I share the format of news I prepared today? Yeah, you should have sent me on the chat now, Nicholas. The chat is not, I'm not able to message in chat. No, on my personal WhatsApp chat. WhatsApp chat. हाँ हाँ हाँ, दर्शन हेलो। हाँ, सो मुझे बस पूछना था कि आई नो हाउ टू बिल्ड मॉडल्स एंड रिपोर्ट, आई हैव आल्सो 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, सो ओके, मैं ड्राइव में से कहाँ से स्टार्ट कर दूँ अभी सीखने के लिए खुद से? तो वी आर स्टार्टिंग विथ हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ठीक है। ओके। तुमको मॉडल बनाने आता है तो फेयर इनफ, तो मॉडल बनाना चालू करना हॉस्पिटलिटी सेक्टर पे, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटलिटी पे ठीक है। हाँ, सो वी आर ट्रैकिंग, सो दिस इज EM 14 का, सॉरी EM 13, हाँ ये जो है ना, यहाँ पे हमने चालू किया था। तो बेसिकली पंचिंग अच्छा। नंबर, ये टास्क है, ये ऐसे चालू करना फिर। हम्म। एनालाइजिंग ऑफ डेटा, पंचिंग, इंट्रोडक्शन टू एसेट, तो ये सब ये तो पता होगा, पर वो पंच डेटा कैसे करते हैं,
क्या करते हैं, दैट ठीक इज है। इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम अभी वापस 3 to 5 यही इसी बैच कंटिन्यू हो रहा है। देयर वी आर एक्चुअली मेकिंग अ रिपोर्ट ऑन द, मतलब तुमको कंपनी समझानी है मुझे, ठीक रिपोर्ट है। कैसे लिखना है वो अलग पार्ट, मतलब कितना डेटा तुमको डालना चाहिए मॉडल्स में, ऐसा। हम्म। दिस वाज जस्ट तो बेस, अभी ये जो हुआ था वो सब बेसिंग था। अभी M15 बैच में ये कंटिन्यू होगा ना फिर? ये कंटिन्यू होगा, यस यस। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ओके। सर 15 बैच में ये वाला कंटिन्यू होगा या फिर नहीं नहीं, ये ऑटोमोबाइल्स वाला वाला? मतलब, नहीं नहीं, ये वाला एज इन द हॉस्पिटलिटी सेक्टर विल गेट कंटिन्यू, बस वही चल रहा है ना अभी, ओके ओके ऐसा है। ओके ओके, तो तो हॉस्पिटलिटी में सर फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो कैसा हुआ है, जो पहले 3 to 5 में थे ना उनका मॉडलिंग हो चुका है, जैसे अभी ये संचित ने दिखा ना वैसा उनका मॉडलिंग हो चुका है। तो नाउ मॉडल के साथ साथ क्या आता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है। यू शुड स्टार्ट विद, अगर तुमको मॉडलिंग आता है तो फाइन, बट नहीं आता है तो स्टार्ट पंचिंग नंबर, तो वापस जीरो से ही चालू होने वाला है सब कुछ। तो नंबर्स एक्चुअली कैसे पंच होते हैं, हाउ यू नीड टू पंच दोस नंबर्स इन अ सीक्वेंस, कंपनी क्या होती है, वो जो ट्रांजिशन होता है, लेट्स से एक होटल इंडस्ट्री में कौन से सेगमेंट्स हमको पता होने चाहिए, 4 कंपनीज में क्या फर्क है, तो वो हम चालू करने में। तो लेट्स से आई विल टेल यू सिद्धांत, इन द नेक्स्ट वीक मुझे हॉस्पिटलिटी सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है, सब कुछ पता होना चाहिए मुझे, सब कुछ, जैसे क्या, कौन से कंपनीज है, कहाँ से रेवेन्यू आता है, कितने होटल्स है, कितने कीज है रेवेन्यू पर, कितना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बोला है वो लोग ने, तुमने उसका, फिर तुमको उसका रिपोर्ट देना है मुझे। तो यही होगा हाँ। अगले 1 महीने तक, कि तुमको मुझे 1 महीने बाद, 1 1.5 महीने बाद कंपनी समझानी है। मॉडलिंग श्योर देखना है सर। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर तुमको मॉडलिंग समझता है। ये मैं क्यों रखता हूँ, कोई कोई होता है जिनको लाइव ही सीखना होता है, बट जैसे अभी दर्शन ने बोला उसको ऑलरेडी आता है बनाने को, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जस्ट एक गो थ्रू करेगा तो समझ जाएगा क्या है। पर कोई कोई होते हैं कि जिनको डाउट होता है, उसके लिए मैं लाइव करता हूँ, ऐसा। श्योर सर श्योर। ठीक है। तो सर अभी मैं बस अभी अभी जो मतलब मेरा डे है तो उसमें मैं एक न्यूज़ लेटर डाल रहा हूँ, हाँ और बस फिर बाकी जो मेरा NISM 15 का प्रिपरेशन है वो कर रहा हूँ अभी मैं। हाँ चलिए, कर रहे हो तो बेस्ट है। और ऑटोमोबाइल भी रिकमेंडेड है, क्योंकि हर महीने उसका अपडेट आता है। तो जैसे अभी नेक्स्ट 31st के बाद फर्स्ट को आएगा अपडेट, तो यू नीड टू नो कि कैसा बनाना है, क्या बनाना है, तो ओवर द टाइम वो कर लेना, ऐसा। श्योर सर, मेरे को वही अभिषेक ने मेरे को उसका एक्सेस दिया था, तो हाँ मैं वही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बना रहा था हाँ हाँ, साथ बनाओ में। चलेगा। वो क्या ना, वो अपडेट है, मतलब कोई तुम इंटरव्यू में जाके बोलोगे ना तुम क्या करते हो, तो ऐसा नहीं हम्म। बोलना होता कि मैं मॉडल बनाता हूँ, मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं सेक्टर ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा, सेक्टर ट्रैक करके क्या कर रहे हो, सर देखो ऑटोमोबाइल का मैंने ये ट्रैक किया, ये अपडेट हम्म। आया था मार्केट में, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता, तो न्यूज़पेपर पढ़ के भी हमको समझता है। तो क्या होता है, हमको हम्म। इंटरव्यू में ये दिखाना है कि वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, रादर देन सेइंग कि कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स का कुछ मतलब नहीं है। आई ऑल्सो डोंट बिलीव, इसके लिए मैं रोज आता हूँ कॉल पे। आई गेट बोर्ड, वो ना कोर्स कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं, सब लोग कोर्स ही कर रहे हैं, तुम क्या अलग कर रहे हो। तुम जाओ यूट्यूब पे, ऐसे तुमको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। तो मेरा ऐसा एग्जैक्टली। है कि तुम वो जो प्रैक्टिकली जो चीजें कर रहे हो वो अप्लाई करो, कि क्या हो रहा है श्योर अभी, सर। जैसे मॉडल बनाया, जैसे मैंने बोला स्टारबक्स, अभी तुमको अपडेट करना ही है उसके बारे में, या फिर जैसे कोई एक्वेशन आया तो यू हैव टू अपडेट इन योर फाइनेंशियल मॉडल, हम्म। ऐसा है। तो इसके लिए सब श्योर प्रिपेयर सर। होना चाहिए, इसके लिए ये होते सेशन, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग सब प्रिपेयर होके मेरे पास ऑलरेडी सब डेटा होना चाहिए। फिर वो डेटा कैसे डालना है, क्या डालना है, वो तुमको बता दूंगा। श्योर श्योर। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ओके Sir, ओके गाइस, थैंक यू। हाँ सॉरी, so या I have just graduated, so I don't have any knowledge about financial modeling. So हाँ, नो from इश्यूज। this weekend, so हाँ, we'll start from the basics, right? यस That, यस 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 यस, नो इश्यूज, इफ यू डोंट नो एनीथिंग दैट्स व्हाई आई एम लाइव ना, इसके लिए आई एम देयर लाइव। नथिंग विल बी स्टार्टिंग की सब कुछ बीच में से कुछ चालू हो रहा है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम बेस। लेट अस से you have joined my company, you will be joining my हाँ company on Monday, and I will tell you that what are the things are required for the week to do. Okay. Sir, Yeah, Ankit. sir, I was just going through the automobile, the cohort that was sent. Mhm. Sir, in the model preparation that was told, we have to do the month wise, right? Like from Month wise. Yes. monthly wise, because there were two. The one which you have showed was year on year, like 25 and 26. So there are two parts. One is year Mhm. on year, one is month on month. Okay. Okay. So Okay. year on year, so at the end it comes. Acha, now it is also two part. Mhm. Month on month, what is the difference? See, January, February is month on month. Okay. January 25 and January 24 is year on year.
So that is also monthly data only. Okay. Got it? Let's say if you want to, Actually, compare. See, Abhi, now when you are comparing two growth phase, now Diwali season, can you compare a Diwali and a Christmas, or maybe Diwali and Diwali season and a non-festive season? जैसे सितंबर में दिवाली थी, तो सितंबर अक्टूबर के अगर तुम सेल्स कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली सितंबर में ज्यादा ही दिखेंगे तुमको. You have to compare this September with last year September. That is called year on year. वो है monthly sales ही. Okay. Okay, got it. Year on year मतलब ऐसा नहीं कि yearly numbers है वो. Okay, so actually first time, so I was like confused. No issues. Good that you asked. Oh, thank you, sir. Welcome. Okay, guys. Thank you. Thank you, everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you so much, sir. Have a nice day.